So good morning to everyone. This is Smriti Gautam from Kumari Mayavati Girls PG College, and today I am going to share a video of a topic of environmental biology, which is structure and functions of Indian aquatic ecosystems, in which comes marine, eustarin, and freshwater ecosystem. So to study it deeply, just have a look on a presentation which I have prepared. This is the PPT of environmental biology, and my topic is structure and function of aquatic ecosystems. So in this there is introduction, aquatic ecosystem, and marine ecosystem, freshwater ecosystem, eustarin ecosystem, function and reference. So basically we are coming to the introduction. So the term ecosystem was proposed by a British ecology A.G. Tansley in the year 1953. The ecosystem represents the basic functional unit of ecology, which comprises of the biotic communities mutually related with their non-living and in abiotic environment. मतलब कि वो इकोसिस्टम जो कि रिप्रेजेंट करता है बेसिक फंक्शनल यूनिट को इकोलॉजी की, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक इन्वायरमेंट दोनों इंक्लूडेड होते हैं. नॉन लिविंग एंड लिविंग बोथ दी कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड. एक इकोसिस्टम में बायोलॉजिक इन्वायरमेंट होता है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में रह रहे होते हैं, एज वेल एज ऑल दी नॉन लिविंग दैट इज़ एबायोटिक physical components of the environment such as air, soil, water and sunlight. Aquatic ecosystem. So aquatic ecosystem is an ecosystem in a body of water, means the ecosystem which is present in water. Communities of organisms that are dependent on each other on their environment live in aquatic ecosystem. तीन मेन टाइप के इकोसिस्टम होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में. फर्स्ट वन इज़ मैराइन, सेकंड वन इज़ फ्रेश वाटर एंड थर्ड वन इज़ यूस्टारिन. सो मैराइन इकोसिस्टम इन विच लाइक अदर इकोसिस्टम थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं. सो एबायोटिक कंपोनेंट्स में तो हमारा सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये सारे जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो आ जाते हैं. और बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं, डेट इज़ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स. सो बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, few microscopic and unicellular algae, weeds and brown and red algae. These form the basic of all other life found in sea. Next is secondary consumers, also known as the primary consumers of the sea. These are certain large sized fish, example mackerel, herring, shark, etc. Certain fish feed primarily upon smaller members of their own class, and the growth of shark represent a food chain of 5 or more links. Next is decomposers and transformers. So decomposers of sea are marine bacteria. So some bacteria are present in sea which decompose the dead living creatures in the sea. The soluble and decomposed material is now attached by other type of bacteria, the transformers. So the decomposed material which is decomposed by the decomposers is now attached by the other type of bacteria, जिनको हम ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं. वो कन्वर्ट करते हैं टू द फॉर्म्स टू बी रीयूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स. ओके, सो नेक्स्ट इज दिस इज अ पिक्चर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इन marine form. So here you can see algae, diatoms, dinoflagellates, fishes, coral reefs, everything you can see in just a picture. It is a type of a ecosystem, marine ecosystem. Next we are coming upon to freshwater ecosystem. So freshwater ecosystem are the ecosystem जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं लेक्स को, पॉन्ड्स को,
लाइक अदर इकोसिस्टम, इसमें भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट में वाटर होता है, डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोलर रेडिएशन, ये मेन सोर्स है एनर्जी का। बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है आपका प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड अगेन ट्रांसफॉर्मर्स। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर। द मेन प्रोड्यूसर्स इन पॉन्ड या फिर लेक होते हैं जो वो होता है एल्गी या फिर कुछ एक्वाटिक प्लांट्स जो कि पॉन्ड्स और लेक्स में फाउंड होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अजोला, हाइड्रिला, लैमना, निम्फिया एक्सेट्रा। सो या तो ये फ्लोटिंग होते हैं या फिर रूटेड होते हैं एट द बॉटम। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में थ्रू फोटोसिंथेसिस। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। Next is consumers. In a pond ecosystem, the primary consumers are tadpole, larvae of frogs, fishes and other aquatic animals which consume green plant and algae as their food. Example, frog, big fishes, water snakes, etc. पॉन्ड में सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अलावा ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर सच एज वाटर बर्ड्स, डिकम्पोजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। व्हेन एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स डाई, जब एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया और फंगी उनके डेड बॉडीज़ पे अटैच हो जाते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और एलिमेंट्स में। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। ये हो सकता है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया या फिर फंजाई। This is the picture I am sharing. It is a picture of a pond or lake where you can see the floating plants. So in this ecosystem you can see tadpoles. These are the primary consumers, and then some fishes. These are the secondary consumers, and water birds are also consumers other than the secondary consumers. Next we are coming upon to estuarine ecosystem. So two main components are again there. Abiotic is such as phosphorus, nitrogen, temperature, light, pH. Biotic producers में होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड absorb nutrients. Second is primary consumers, zooplanktons that feed on phytoplanktons. Beside them some small microorganisms that feed on producers. Secondary consumers include shellfish and small fish feeding on zooplankton. Decomposers are fungi, bacteria, which are the chief microbes active of dead organic matter. So this is a picture of ecosystem complex structures. You can see planktons and forested wetlands and mud and sand flats, submerged aquatic vegetation, shallow slope and deep channels. Next is what are the functions of aquatic ecosystem. So aquatic ecosystem perform many important environmental function. They recycle nutrients, वाटर को प्योरीफाई करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं और हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं फॉर द वाइल्ड लाइफ. नेक्स्ट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम ह्यूमन रिक्रिएशन में भी यूज़फुल होता है एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टूरिज्म इंडस्ट्री. A stress on an aquatic ecosystem can be a result of physical, chemical or biological alteration of the environment. Biological organisms found in aquatic ecosystem are either autotrophic or heterotrophic. Physical alterations include changes in water temperature, water flow. Abiotic environmental factors of ecosystem include temperature, salinity and function and flow. These are all the functions of the aquatic ecosystem. So that's all about the ecosystem, aquatic Indian ecosystem of freshwater, marine and estuarine. Thank you.